Hello, welcome to My Startup TV. I'm Major Sunil Shetty. We've been hearing about AI in pretty much every field of life. In every sector, every segment, every industry is now either talking about AI or in the process of integrating AI. Now, the same thing is happening with video production. Today, I have with me on Founder Talk Show live with me Akshay Jain, who is the founder of Studiovity, a startup that is integrating AI or using AI to make video production easier. So let us understand what Studio Media does and what Akshay's journey has been as a founder. Akshay, welcome to Founder Talk Show. Yeah, thanks, Sunir, for welcoming me and introducing me on your show. And yeah, it would be a great pleasure to tell me about my journey of my entrepreneurship and how we started and how we began our journey. So while I was at IIT Roorkee, I have this cinematic section, okay, where we used to create short stories and some songs and all, and that's where that artistic look comes into my play. Okay, so amid COVID-19, there is a boom of the video conferencing happened, Zoom and all that. People got locked out and all, and then we found out that there is one more important asset that people are not focusing on, and that is how video quality can be improved, how the way we tell the story can be improved. Okay, so at that point of time, since I've been having a great IT experience, I've been also studied AI course Stanford University. So then I realized that there is something that can be done and that can completely revamped. Okay, but the story didn't stop there. Okay, with the advent of AI, with the advent of we see Ghibli image to video and all, we conceptualized that we wanted to make a film using AI. Okay, completely making a film using AI is something that we have a vision and believe on it, and currently we are working on it, and we have around 80 to 90% of the process we have automate in this section. So I'll tell you about a bit more, but yeah, that's a small journey about it. Well, Akshay, you know what? When you talk about AI and film production, you caught my attention. मतलब मैं अभी मैं चाहता हूँ कि उस शो से बाहर निकलूं और आपसे बात करूं कि क्या कर रहे हो और किस तरह से हम आपके साथ में वर्क कर सकते हैं क्योंकि एज अ प्रोडक्शन कंपनी एज अ टीवी कंपनी we are also integrating a lot of technology, new technology, especially AI, into our processes. So हाँ, Mhm. वो एक रहता है जो एक टेक्नोलॉजी को देखो किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इन आवर डे टू डे वर्क. So, somebody, who's in IIT, and generally hota ye hai ki the moment you talk about IIT, people are, chasing, those big packages, big salaries, going abroad. What made you choose, entrepreneurship and that to getting into the production side of it? It's not like I get into it. Okay, it's something, that problem identification is one aspect that get my attention. Okay, so Mhm. I like stories. Okay, and in the IT, there's one famous tool like Jira. Okay, so when I have one plot of the movie in my mind, uh, I wanted to architect that story. Okay, so in a research and identification of tools and software, how can I start the journey, how can I do screenwriting, how can I how things will create a big massive movie. Okay, blockbuster movie that we see of around Bahubali and making 2000 plus crores and all. I have this idea that how can I tell my story to the masses. Okay, so in a process of identifying, I got to learn about that this whole industry is unorganized. Okay, there are small tool for a small work. People are still dependent on Microsoft Excel, on pen and paper. Okay, so that's where when I talk to lot many people, I heard their pain and all, and then I realized ki let's why not to put
my passion into making something creative software. So that's how, I formulate a small team, and now we have been working on, building that, next level things. So that's interesting that you found a pain point and you start working on it. But then Yeah. we also through this program, what we try to do is for the benefit of our viewers, especially student entrepreneurs, aspiring entrepreneurs, and early stage entrepreneurs, we want to take the lessons of your of entrepreneurs like you and share it with them so they can that can help them in their journey. So मैं जानना चाहूंगा one of the major things that we time and again hear in our हाँ conversation with founders in India, especially is parents pressure, right? कि parents कहते हैं job ले लो, right? And हाँ आपके लिए हाँ especially getting into IIT was not easy. You got in, and I'm sure या there must have been pressure from your parents, right? कि अब आप IT IIT में चले गए हो तो get a good job in a MNC company or go abroad. So was there pressure like that on you? कि instead so of doing i entrepreneurship, get into, i and I how did you didn't. overcome? Yeah, sure, sure. Thanks. It's a very great question. Parents have an anxiety, okay, and for that reason, because that market, and putting that much effort into getting into IIT, and then not having getting a job is a kind of pressure that many of the people have. Okay, I did a different approach. Okay, so first and foremost, I started working. Okay, I worked in dance to Paytm, okay, in the space, and I understand how a scalable solution build on top of it. Okay, while I am working with Paytm and dance, I have this craving of doing something that grabs the attention of the big masses, and that's where on a parallel line of doing the more hustle, working on weekend on the side project. We started as a a small project. What you won't believe, most of the users, around 50-60% of the user from USA, Europe, and India, they start reaching out, and that grabs our attention. Okay, our proof of concept is working. लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि हाँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बने जो उनका काम, सिर दर्द और बहुत सारी चीजें कम कर दे. Okay, so that's where we started. We scaled to around 10,000 users. So हमने realize किया कि हाँ, now is the time. We also start getting attention from big companies. Also, in fact, IIM काशीपुर है, उनने हम लोग को back किया. Okay, so lots of many things start getting from the second phase of it. That's where we started completely doing full time. Okay, so that's like side hustling, proof of concept, and then getting into the road is the my approach. Everyone have a different approach of doing the entrepreneurship, and I won't say कि ये वाली अप्रोच गलत है या ये वाली सही है. जो वर्कआउट करे, जो आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग कि वो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की सॉल्व हो रही हो आपके उस इट शुड बी स्केलेबल, इट हैव अ बिग टैम सैम जोन. सो अगर वो सब चीजें हैं तो आई वुड से कि हाँ, दैट्स लेस रिस्की अप्रोच, आई वुड से. What you said is right, कि अगर अगर risk कम है और scalable है, and you see there's a genuine pain point, so as an entrepreneur it makes sense, as a entrepreneur, yeah, student entrepreneur, aspiring entrepreneur, it makes sense to jump in. Now when you see one is to get in, right? दूसरा होता है कि जैसे या अगर आप स्टूडेंट हो वो टाइम में, at that point how do you manage, what are the challenges as a student to balance between being a student where you have a very tight schedule, exams, projects, assignments, internship, and doing entrepreneurship along with it. How do you balance that? If you could share your experience for the benefit of other students out there who want to be entrepreneurs. या श्योर. सो मैं आपको पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमें एज ए इनोवेशन करना पड़ेगा, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा. ठीक है,
हमारा विजन बड़ा होना चाहिए. सो गेटिंग डायरेक्टली इनटू द फील्ड is the burning of your effort, is a burning of your money, and there are many things. Okay, तो मेरा मानना ये है कि rather than doing it, find a mentor who have an experience. Okay, they want people who can, help them, okay, with their full enthusiasm. Okay, uh, full productivity. एंड दैट्स वेयर आपको उनसे बहुत कुछ चीजें सीखने मिल जाती है. ठीक है, आपको एक करंट सिस्टम पता चल जाता है कि अभी जो क्वालिटी लेवल है, अभी जो कस्टमर की नीड है, वो यहाँ तक है. ठीक है, जब तक वो डेल्टा ज्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं ना, पीपल वॉन्ट स्विच फ्रॉम द प्रोडक्ट दैट दे आर यूजिंग टू द न्यू प्रोडक्ट. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि फाइंडिंग अ राइट मेंटर. अगर आपको लाइफ में अर्ली मिल जाते हैं मेंटर, वो सब ठीक है, जो गाइड करने के लिए तैयार हैं, देन आई वुड से यू कैन हैव यू नो I would say you are lucky. Those who get into the field and those who are usually successful is because of good mentors. Okay. दूसरा तरीका है कि इंटर्नशिप करें. ठीक है, कंपनी में जाएं रेदर देन बीन डूइंग द कॉलेज डिग्री, गेटिंग द नंबर. उससे आपको फील्ड का पता चलता है, उससे आपको कस्टमर का पता चलता है, उससे आपको ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है. मैं ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे 50,000 यूजर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सॉरी, या 1 लाख है. मैं वो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जो स्टार्टअप है, जो 4-5 लोगों की टीम है, 10 लोगों की टीम है. आपको पूरा का पूरा एक वाइड व्यू मिलता है. वहां पे आप काम करिए 2 महीने, मान लो आपने वहां ऑफिस जाके कर लिया, फिर वर्क फ्रॉम होम कर लिया. ठीक है, तो वो चीज है ना, आपको एक बहुत बड़ा विजन देती है. सो दैट्स आई वुड से इज अ मोर एप्ट अप्रोच. And then if you have gained some knowledge of the market and those things, then you enter into the entrepreneurship. बिल्कुल सही कहा आपने कि व्हेन यू गो टू अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा खुद की कंपनी है, हमारा कोई बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, हम भी खुद स्टार्टअप हैं, मीडिया स्टार्टअप हैं. तो इसमें होता क्या है कि व्हेन समबडी कम्स एंड डज द इंटर्नशिप हियर, तो उसको एक 360 डिग्री व्यू मिलता है. साथ ही साथ में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का, अलग अलग चीज में काम करने का, सीखने का मौका मिलता है. हैंड्स ऑन, ये नहीं कि मतलब किसी के अंडर आप कर रहे हो, इधर आप डायरेक्टली काम करते हो. तो आई आई फुली एग्री विद यू. मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे एज अ स्टूडेंट ये कितना मुश्किल होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना, कि आप एक तरफ अपना बिजनेस चला रहे हो और एक तरफ में यू आर आल्सो रनिंग योर यू डूइंग योर, यू हैव टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्स एज वेल एज डू द एंटरप्रेन्योरशिप. वो टाइम मैनेजमेंट कितना क्रिटिकल होता है, कैसे करते हैं उस चीज को? आई वुड से एवरीवन हैव 24 आवर्स. ठीक है, कोई के पास ऐसा नहीं है कि ज्यादा समय है, कोई के पास पास कम समय है. ठीक है, सो एक जस्टिफिकेशन तो ये है कि पीपल डिडंट गॉड डिडंट गिव अ बायसनेस कि इसको 48 आवर्स दे दिया, इसको 24 आवर्स दे दिया. सो दैट्स गुड. ओके, सेकंड थिंग इज लाइक यू हैव टू थिंक कि डज इट एड द वैल्यू टू मी. अगर आप कुछ कोर्स भी पढ़ रहे हैं, तो वो उसका एप्लीकेशन क्या है. ठीक है, अगर हम इन दोनों को अलग अलग समझेंगे तो ये हमें बड़ी चीजें दिखेंगी. बट इफ वी यूनिफाई एंड फाइंड कि यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट हो सकता है क्या, जो मेरा एजुकेशन है उसी के अराउंड में मैं अगर वर्क करूंगा तो मेरा एजुकेशन का भी इम्प्रूव होगा, एंड प्लस मेरा ऑन्टरप्रेन्योरशिप भी जर्नी होगा. ये 80-90% ऑफ द टाइम सिमिलर नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि हमारा एजुकेशन कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होता है. ठीक है, सो दैट शुड बी यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि यार ये चीजें नहीं है हमारी, ये एक दिन रात को एक दिन पढ़ने की है, मैं एग्जाम दे के पास हो जाऊंगा. जो प्रैक्टिकल वाली चीजें उस पर ज्यादा टाइम देना चाहिए, बिकॉज इट एड अ वैल्यू. और दूसरी चीज ये है कि एक टीम एंड लीडरशिप स्किल वहां पे आप डेवलप कर सकते हो. यू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ पीपल, पैशनेट पीपल. ओके, दोज हु फॉलो द सेम विजन के यार मुझे ये चीजें करना है. ठीक है, एंड व्हेन यू हैव अ टीम, देन आप कई चीजें एक साथ मैनेज कर सकते हो. आपका जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन व्हाट आई वुड वांट टू से, कि आपके पास कुछ स्किल है, मेरे पास कुछ स्किल है, हम दोनों जब मिले, सो वी फिगर आउट कि अच्छा इसको और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं.
तो एक छोटी सी टीम या सेक्शन ज्वाइन करके, कुछ फंड अलोकेट करके, switching off social media, because lot of time insta and those things takes our time. तो वैसे करके we get an ample amount of time where we can work on building something good. तो आपने बहुत सही बात बताया कि जिसमें टीम बिल्ड करना। तो ये एक जो इसके बारे में अगर आपको बताया कि इन योर टीम कि आपके को फाउंडर्स हैं, और आधे योर कॉलेज में, स्कूल में, या आपके साथ में आईआईटी में, आईआईटी से हैं, और कैसे आपने उनको ऑनबोर्ड किया, क्या क्या मतलब क्या थॉट प्रोसेस था, किधर आपको भी सोच विचार मिली जिससे कि आप लोग एक जर्नी पे आ पाए? ओके, सो बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि देयर इज एन यंग यांग थ्योरी, ठीक है, जिसमें आई वुड से कि आधी स्किल आपके पास है, ठीक है, उस चीज को सक्सेसफुल करने के लिए 50% ऑफ द स्किल आई हैव टू मेक इट सक्सेसफुल। ओके, सो दिस यंग यांग कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। ओके, लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक कि मेरे पास जो स्किल है वही सिमिलर काइंड ऑफ स्किल का बंदा मैं ढूंढूं, एंड उससे एक पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज पैशन टू द प्रोजेक्ट, ओके, और द प्रोडक्ट, लाइक हाउ मच द स्किन इन द गेम यू हैव। ओके, let's say this skin in the game is a very good concept, okay, that I wanted to tell, and that's where you can find and figure out which people you have to buy in the organization. So अगर मुझे लॉस हो रहा है, ठीक है, मेरी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो उससे मुझे कितना ज्यादा लॉस होगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, लेट टेक एन एग्जांपल ऑफ पायलट एंड अ बैंक कंसल्टेंट। ओके, सो अगर बैंक पीपल आर जेलस ऑफ पायलट of having this ambient and lavish life and all, but अगर पायलट कोई गलती करता है तो पायलट भी मरेगा, ठीक है, और प्लेन क्रैश होगा, ठीक है। सो ही हैज अ सारा लॉस स्किल ऑफ गेम है। द होल स्किल, बॉडी इज इन द गेम, नॉट जस्ट या द। इट्स इज बॉडी इन द गेम। ओके, एंड दूसरी तरफ हम अगर बैंक कंसल्टेंट देखें, ठीक है, जिसने कोई ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट किया या इंश्योरेंस को किया या कुछ किया, ठीक है, तो उसमें उसका कितना गेम है? अगर सामने वाले की कोई डेथ होती है, ठीक है, अगर कुछ होता है, तो उसकी जॉब चली जाएगी क्या? नहीं होगा कुछ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसको एक लेटर आ जाएगा या फिर वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेगा विद इन 1 to 2 years, जब तक उस चीज का प्रोसेस होगा। तो उसमें उसका स्किन नहीं है, उसमें उसका लॉस नहीं है, अगर सामने वाले का लॉस हो रहा है। सो दैट्स अ गुड वे टू फिगर आउट कि हम अगर टीम बिल्ड कर रहे हैं तो सामने वाला, अगर गेम हम हारे तो सामने वाला क्या हारेगा, ठीक है, या जीते तो क्या जीतेंगे हम। तो दैट्स सेकंड थिंग। So these are the couple of things that you need to take a priority while having right mindset of people. So how did you go about onboarding your team Yeah, or your co-founders? If you can talk yeah. about a bit So about them. it's we been connecting with 2 to 3 months daily. Okay, so that's where we get to know कि commitment है कि नहीं है, ठीक है। If a person have a commitment, then at least within 15-20 days they will go run away. Okay, without money, are they able to work or not? Okay, so उससे भी चीजें समझ में आती हैं, and then they're having a skill set, okay, that they have the star level skill set that take me there. So these are the there is a one very good star diagram, okay, where you have to choose between loyalty and the skill. Okay, so you know if you have high star on the skill set but low loyalty, then also things doesn't work out. So you have to do the trade off between those things, and you get to know the vibes when you keep on connecting and understanding that whether he is for what. So Yeah. once the core team is built, then it's bit easier to find the next set of employee. Like you hire for an internship, you take people from 1.5 year of experience, and then within 1 or 2 months if they get gel, then we keep on scaling. So that's scaling up the organization comes. Yeah.
So viewers, that is Akshay Jain, founder of Studiovita. We are talking to him. We've been talking to him, and we're trying to understand what was his journey as an entrepreneur. How did he go about, being a student? He started his entrepreneurship journey, and then, how did he balance out between it, his studies at IIT and launching his own startup, and what led to, or how did the idea itself come about? So now let's understand in the second part segment as to about his business itself, about his startup, what Studio Vita does, what is it into. So Akshay, let's understand what Studio Vita is all about. क्योंकि हम आपका रिसर्च कर रहे थे, हमने देखा कि you use AI to for video production in your as a business. That's what you do. You provide use AI as a solution for content creators. AI आज की तारीख में हम हर जगह AI सुनते हैं. तो थोड़ा व्यूअर्स के लिए इसको आसान तरीके से बताया करते क्या हैं? मैं पहले एक चीज बोलूंगा कि वीडियो भी एक प्रोडक्ट है। द वे वी कंज्यूम अदर प्रोडक्ट, वीडियो भी एक प्रोडक्ट है जो हम कंज्यूम करते हैं। एंड इट्स एन इंटेंजिबल प्रोडक्ट जिसको हम टच तो नहीं कर सकते बट वी फील। हर एक प्रोडक्ट की जो जर्नी है ना वो 5 स्टेजेस में डिफाइन होती है। ठीक है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट होगा जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज द लास्ट जर्नी, लेकिन उसके पहले की जो जर्नी होती है ना वो ऑलमोस्ट सेम होती है। वन इज द कॉन्सेप्ट क्रिएशन, इन द वीडियो लैंग्वेज वी कॉल इट फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग। ठीक है, तो फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना, वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना, उसको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, एंड देन सेकंड थिंग कम्स इज द प्री प्रोडक्शन। ओके, in simple language we call is a pre planning stage. Okay, if we were building any other product, like let's say we are building a, a JBL speaker, okay, AirPod, okay. If we are building, so we have to pre plan कि क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। ठीक है, हियर द डायरेक्टर फिगर आउट कि कौन सा कास्ट लेना है, कौन से हीरो को साइन करना है, वेदर शाहरुख विल वर्क और सलमान विल वर्क। ओके, इसमें कितना बजट आएगा। ठीक है, हर एक छोटी बड़ी चीज के कॉस्ट्यूम क्या रहेगा इसमें। ठीक है, कौन कौन से दिन पे शूटिंग होनी है, कश्मीर की शूटिंग है या कन्याकुमारी की है। ठीक है, तो एवरीथिंग कम्स इनटू प्री प्लानिंग। ठीक है, and then the third step comes as a production. So this is where if we wanted to build this product we have to put it into the factory. Okay, so in the video also producer and directors generally go for a shooting. Okay, and then the post production activity comes where lot many people are aware about is the packaging comes. ओके, जहां पे आप एडिटर को यूज करते हो, अडोबी एडिटर एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, हम लोगों ने जो चालू किया है ना वो ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से डायरेक्टली हमारा जो विजन है वो वीडियो को आउटपुट करना। ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट, एंड वी हैव कंप्लीटली ऑटोमेटेड द स्क्रिप्ट राइटिंग प्लस द प्री प्रोडक्शन वर्क। तो अभी पता चल जाएगा कि अगर एक्टर ए है, सेट ए है, तो हमारा मूवी का जो स्टोरी बोर्ड है, ठीक है, अ सीरीज ऑफ इमेज, हाउ वुड इट लुक लाइक। तो वो सब चीजें हैं जो हम लोगों ने ऑटोमेट कर दी है। आने वाले टाइम में हम लोग एक फर्स्ट ड्राफ्ट मूवी का बना पाएंगे जिससे बहुत सारा मनी सेव हो पाएगा। क्योंकि इफ आई शो यू द मूवी बिफोर आई डू द प्रोडक्शन, देन यू कैन टेल कि ये मूवी सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। ठीक है, and then they producers and director can get the finance and all, and when they are everyone is on happy and on the set, then they start shooting the real film. So this is where our whole Studiovity is innovating. I think आपको इजी में समझ में आ गया होगा, आई थिंक व्यूअर्स को। तो अगर अगर मैंने सही समझा कि आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों का जो सोल्यूशन होगा या प्लेटफॉर्म होगा उसको इस्तेमाल करते हुए कोई भी एक फिल्म हाँ, मेकर, चाहे वो शॉर्ट फिल्म मेकर हो या फीचर फिल्म मेकर हो, फुल लेंथ फिल्म मेकर हो, वो एआई टूल के माध्यम से उन्हें पता चल जाएगा कि कितना बजट है, किसको इसमें लेना है, कौन लीड एक्टर्स हो सकते हैं। सो द हाँ, होल जो प्री प्रोडक्शन का पूरा जो काम होता है उसको आप
स्केल डाउन कर देते हो, उसको कम समय में हो जाता है और आपको एग्जैक्ट बजटिंग मिल जाती है। दैट्स व्हाट द होल आइडिया Yeah, इज, yeah. करेक्ट? That's all whole idea. I can pretty much show our platform. Okay. So to have a comprehensive view. Okay. Just 1 second. Yeah. Sorry. So that I can present it, and then you'll understand. So yeah. Yeah, Uh, let's quickly go through yeah. that thing. Yeah. We Quickly, have about I'll five go minutes. through it. Let Yeah, me know once it's visible. Okay. So yeah, can you able to see my screen? Okay. yes, Hello. Yeah. yeah. We are So able if to see we your screen. Yes. Yeah, so if we go to the Spider-Man project, okay. So here Mm-hmm. there is a Spider-Man movie scenes look like, okay. Okay. And if they wanted to convert it into and translate into Hindi or any other language, they have to do the dialogue correction. Then a script writer can completely do it. Then from here the whole pre-production happened. So let's say if I go to the uh, director angle. Okay, so what director will do, let's say these are the films are made up of scenes basically. So on the left side, these are the scenes, scene 1, scene 2, scene 3, and scenes are made up of shots. So let's say if I go to any scene, okay, and I wanted to know कि इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी इसको शूटिंग करने के टाइम पे. सो नाउ इट विल Mm-hmm. टेल कि वी रिक्वायर मास्क, वी रिक्वायर these many people, okay, greenery, each and everything. It will tell that these are the things that we require during shooting. Okay, so AI will detect and AI will tell कि आपको ये एलिमेंट लगेंगे. एंड देन व्हेन वी गो टू द बजट, देन वी आल्सो गेट टू नो कि कितना कितना कॉस्ट लगेगा इस सीन को शूट करने का. ओके, तो नाउ बेसिकली कमिंग आप कह ऑन. रहे हैं कि आप लोगों का हाँ, जो हाँ. टूल है इसको इस्तेमाल करके, सो इसमें एक चीज जो आपने कहा बिल्कुल सही है, इसमें एक चीज सिर्फ ये रह जाता फर्क जो कि मुझे एक चैलेंज भी लगता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक डायनेमिक, कोई भी शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो, हाँ, एक हाँ. डायनेमिक चीज है जिसमें कि कुछ ना कुछ बदलता रहता है। इट्स नॉट लाइक स्टैंडर्डाइजेशन कि भाई आपने यही चार स्टेप लेने हैं। तो उसको आप कैसे इसमें मतलब किस तरह से आप करोगे? हाँ, तो यहाँ पे जैसे भी हम जो भी चीजें यहाँ पे टैग करते हैं, आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में. यहाँ पे चीजें आ जाती हैं, ठीक है. All those element that we have tagged, and then when we go to the department section, okay, here we can manage each and everything. Like we can see those actors things. Okay, if we feel like there should be only 4 set, okay, or location, then we will define those location in the filming location. Let's say if I wanted to shoot into Delhi metro station, okay, then we will define those location, okay, and it will take only those location. Okay, so these things will be covered dynamically also. Or if they wanted to work on with the AI also, then it can work on the AI aspect also. बहुत बढ़िया। सो Coming. अक्षय, Huh. अक्षय, because we are running out of time, so Yeah, what I would like to understand from you is कि this will be what subscription model as yeah, a service this is a या जी? yeah, this is a subscription model. Also you can create a storyboard also, these images, okay, where it will run and create a PPT for it. Let me stop sharing my screen. Okay. तो अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट एल्स आर यू वर्किंग ऑन? आप लोग और क्या चीज आप लोग कर रहे हो? एक तो ये समझ में आ गया स्क्रिप्ट बनाना और प्री प्रोडक्शन काम पूरा Yeah. करना, इसके अलावा कुछ और आप लोग कर रहे हो हाँ, एज अ तो स्टार्टअप? स्क्रिप्ट से पूरा का पूरा क्योंकि इमेज पोस्ट जनरेट हो प्रोडक्शन जाता. क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जितना हाँ. जितना चैलेंज, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जितना चैलेंज हम अगर मान लीजिए आपको एक्स इज द चैलेंज प्री प्रोडक्शन में, तो उसका मेनी टाइम्स इज पोस्ट प्रोडक्शन, क्योंकि आपको वीडियो एडिट करना है, तो उसमें भी कुछ काम कर रहे हो आप लोग, बिकॉज टुडे देयर आर लॉट ऑफ टूल्स फॉर एडिटिंग वीडियोस, बट आर यू आल्सो वर्किंग ऑन एनीथिंग इन पोस्ट No, no, प्रोडक्शन we स्टेज? we are not working on it. Our vision is to create a final final draft of the video.
सो लेट्स से आपका जो इमेज हम लोग का जनरेट होता है एआई से, वो काफी कंसिस्टेंट रहता है कैरेक्टर से. आई हैव शोन यू अ स्मॉल ग्लिम्स ऑफ हाउ गुड इट जनरेट. ओके. एंड देन उसमें ऑडियो भी जनरेट हो जाता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ एआई ऑडियो. एंड देन वो एक फाइनल आपको वीडियो बना देता है. ठीक है. सो दैट्स द फाइनल आउटकम. अभी हम लोग उसको पीपीटी के फॉर्म में निकालते हैं, पीडीएफ के फॉर्म में निकालते हैं, या फिर अनदर काइंड ऑफ फॉर्मेट where people can pitch it to producer. But coming soon, our whole vision is to create a long format video with AI. Okay. Perfect. Starting from script writing, pre-production to post-production. Yeah. So Akshay, thank you very much for joining us on My Startup TV. Viewers, if you want to hear more such stories, experience of entrepreneurs firsthand, from the horse's mouth, as they say, do join us every day at 4 p.m. for live My Startup TV Founder Talk Show. So Akshay, thank you very much for joining, or we look forward to hosting you again on our show sometime soon. Yeah, thank you for welcoming me and having me on this show, and looking forward to it. To stay informed about the startup ecosystem, subscribe to My Startup TV.